नमस्ते। संदीप भाई, आप प्रार्थना करेंगे तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ नमस्ते। सो थैंक यू संदीप भाई फॉर दिस वंडरफुल प्रार्थना। निरंजन दादा, नारायण भाई, विनीता दाई, नमस्ते। सब लोग यहाँ पर हो आप। इट्स सच ए नाइस प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू टुगेदर। लास्ट टाइम हम लोग सब लोग नहीं थे, वी मिस सम ऑफ यू। पर हमने ये स्टार्ट तो किया था। हमारा जो डिस्कशन था रिगार्डिंग हाउ कैन वी अप्लाई वेदांत इन रियल लाइफ और एवरीडे लाइफ। तो everybody will have a different kind of स्टाइल, क्योंकि हम लोगों का, सब लोगों का जो स्वभाव होता है ना, आवर नेचर्स आर डिफरेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर नेचर, we will implement whatever we learn in situations that we encounter. So our situations are unique and our personalities are also unique. So depending upon the situation and our personality, how we have been shaped throughout our life, we will implement the same teachings in different manner. Also, the teachings will be applied differently, even if they are applied by the same person differently in different times. So, a person with a similar mindset may apply the teachings of Vedanta differently in different situations. A couple of examples I like to share with you are, if you are looking at the time scale, so assuming you are talking about, say, 500 years ago, when most of our country was covered with forests. So look at the background behind me. I don't remember exactly where this is from, but here you will see a nice mixture of greenery, forests, as well as some farming. About 500 years ago, or even before that, when there were more forests and less agricultural land, in the forests there would be a number of wild animals that would sometimes be dangerous for human beings. So at that time, killing a wild animal for hunting was not considered to be a great concern. Of course, people like us, we would like not to hunt at all. We would like to not eat any animal flesh. We would also like to live, we would want to live only on vegetarian food for our own spiritual purpose. But at that time, even Kshatriyas, our kings, they were not averse to hunting. So at that time, it was okay. But nowadays, if you think of hunting a wild animal, like, for example, a tiger or an elephant, then you will be put in jail. Because today, we don't have as many forests, we don't have as many wild animals, and we know that wild animals are necessary for protecting and sustaining the ecosystem of the forest. Forests themselves are essential for sustaining the ecosystem in the country. Did you know that wherever there are forests, that's where rain is actually attracted? So rain gets attracted by the forests. I have heard a story of a couple who has moved to some rural place in Karnataka from the US apparently, and they bought a small forest, maybe 10, 15 acres, not very large forest. But within that area, they have only grown trees. Yeah, it's free growing forest. They have reported that it rains on their forest, but it doesn't rain in the surrounding area. So when the clouds form, apparently there is some connection between cloud condensation and falling.
wherever there is a bunch of trees or forest. So, whatever was appropriate at one time, hunting was okay at one time, but hunting is not okay now. So, same activity can be good at a certain in a certain time frame in a window, and in another time frame it may be a bad thing. Similarly, another example I always like to give is we are always told we should speak the truth. So, is speaking the truth always okay? So, the example would be if somebody asks me a question, what was the direction to go to a certain place where large number of people have gathered, and this person is thinking of doing some not so desirable activity there, then should I be telling them the truth about the directions to go to that place, or should I mislead them to go somewhere else so that the people who are gathered in that place are saved from this person with ill intention? So truth is a good principle, but in certain cases you may have to adhere to half truth or non truth. Another example would be in the Gita itself, in the Mahabharata. During the Mahabharat war, Dharmaraj was encouraged by Krishna to utter a half truth. So the elephant Ashwathama died, but Dharmaraj was supposed to declare that Ashwathama has died loudly enough so that Ashwathama's father Dronacharya would hear this, which would demoralize him. But then, in a lower voice, Dharmaraj is supposed to say Narova Kunjarova, whether it's a man or whether it's an elephant. So he says half truth. Why is he encouraged to say half truth? Because that half truth is necessary for upholding the dharma. So, to uphold the dharma, certain things that are technically against our moral principles need to be done to uphold the dharma. Mahabharata tells us about many such stories where you will see the good things about the villains in the story. For example, Karna or Duryodhan, Dushasan, Dhritarashtra. It's not all black. There are shades of gray. Maybe they are darker than, say, Arjun. And then there are fallacies of Arjun also. For example, in the first chapter of the Gita, it's Arjun's confusion. So, Arjun, a person of his caliber, also can get confused. So, the Mahabharata is, or the Gita, both of them are stories of human character, starting from Sattvic, Rajasic, Tamasic, and a mixture of all these three. The reason we are told all these stories is because we want to learn something from that. Mahabharata happened 5200 years ago. But why is it relevant even now, even today? Because the principles underlying that story, those principles are eternal. They are beyond time. They are applicable in every age. They are applicable all the time. They are fundamental principles of how the relative world works. And the relative world keeps working according to the law of karma. So if we understand these principles, if we understand the principles of Vedanta, if we understand the principles of Gita, those principles we would like to apply as best as possible in today's world, in the given situation, so that dharma is upheld, not for any selfish gain, but for the sake of dharma itself. Yesterday I heard something really good. We always hear dharmo rakshati rakshita. So how does that work? So let's forget about scriptures, let's forget about Vedanta, let's forget about Gita. Let's talk about our everyday life. We all have learned the rules of traffic.
if we all follow the rules of traffic, those rules of traffic protect us. So if we uphold the rules of traffic, the rules of traffic will protect us. Dharmo rakshati rakshitha. So why can we not extend this commonsensical approach to larger life? So how do we apply that to larger life? The way I have tried myself is, if we think that getting some work done by giving a bribe or a favor to somebody, that discourages, or not discourages, but that deprives another person who could be deserving, who could have got that opportunity. That's the way I feel. So if you ask me whether I have never taken a favor by offering extra money, I would say I'm guilty of that too, because at least on a couple of occasions, I have gone to a temple and I have paid extra money for express line. So express darshan, right? I have unfortunately had to justify to my own mind that I don't have enough time to stand in the line so that I can get the darshan of the deity, and I can afford to pay extra. So this payment for the darshan is ultimately going for the upkeep of the temple. So if I'm able to pay extra and then I happen to have not much time, I justified it myself. Yes, I'm getting an extra favor or a special favor by paying some extra money. Does that deprive someone else of their opportunity? This happened in Tirupati, by the way. So it doesn't really matter if you pay extra money. You go through a line that is a bit shorter, but ultimately, before you enter the actual temple, both the lines meet anyway. So it doesn't matter. तो देखिए, ये तो मैंने अपने अनुभव के बारे में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर वगैरह में हम लोग अगर एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, वो मंदिर के अपकीप में लगता है, दैट इज ओके। बट जैसे हमने अगर किसी स्कूल में डोनेशन दिया to get our child admitted and the child is not really qualified, so then we are depriving someone else who is more qualified from that kind of experience and education. तो इसके बारे में आप लोग भी अगर कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए आपका अनुभव। नहीं, इस मामले में विक्रम भाई मेरा ये कहना था कि कोई स्कूल या कॉलेजेस में दे आर रिजर्विंग सम सीट्स 10%, 5% कि बगैर डोनेशन लिए वो देंगे ही नहीं। मतलब किसी और का मतलब जहां तक आप बोल रहे हो कि किसी और को सीट मिल जाती तो उसका भला हो जाता था, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके लिए। बिल्कुल सही बात है, डिजर्विंग कैंडिडेट को पहले मिलना चाहिए। मगर जहाँ जो कॉलेज या जो स्कूल में उन्होंने 5% सीट रखी है, जहाँ पैसे दिए बगैर नहीं करना है ना, नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? तो ऐसा तो ठीक है, ऐसे अगर ऐसा ऐसे नियम धर्म अगर है, संकट में मैं काम नहीं करूंगा। नहीं बराबर है, ऐसा अगर नियम हाँ, है तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए, वो स्कूल चलाने के लिए उनको भी तो पैसों की जरूरत होती है। तो सब लोगों से उतना पैसा नहीं ले हाँ, सकते, लेकिन जिन लोगों को संभव है, जिन लोगों की क्षमता है, उन लोगों से अगर वो हाँ, 5% एक्स्ट्रा पैसा लेकर के हाँ। अगर देते हैं, तो वो ऐसे ही समझना चाहिए कि फॉर रनिंग दैट इंस्टीट्यूशन दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली, ऑफ द स्कूल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट मतलब इफ किसी का इफ हक इट इज ना फेयर, मारते हुए हम अगर हाँ, कुछ काम करते। हाँ, इफ इट इज But you फेयर, never इफ इट इज वेल know. नोन, हाँ। किसी का But you never know whether it is going to be fair or not. Matlab, they can always take your child or whoever you recommend just for the money's sake, not for the capability. So that can always happen. So you नो have नो, to ये draw a देखो, line आई somewhere. थिंक विनीता, यू मिसअंडरस्टूड व्हाट नारायण भाई वाज सेइंग इज I understood perfectly. there is कि, a 5% quota reservation for I people who can understood, but pay. that I know what those quotas are.
Oh, I okay. know what those quotas are. Matlab, they are not necessarily very fair. No, and those are not for the deserving. I mean, that is especially for those who are not deserving but who can pay, so that the school can Then run. that is, I don't know. No, Anyway, as long as there is some metric for that, as long as it is fair and open for everybody, then it is okay. So then you know the rules of the game. If you know the rules of the game and if you play the game, that's okay. But if you don't know the rules of the game and then हाँ somebody is बस trying to subvert those rules of the game unfairly, then that is not correct. अभी जैसे नारायण भाई ने कहा कि नहीं मतलब यूनिट चलाना है, तो अगर पैसे नहीं देंगे तो वो कुछ न कुछ नुक्स निकाल के यूनिट के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. तो एज माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, वाज इन मैन्युफैक्चरिंग, सो आई आल्सो नो व्हाट ही एनकाउंटर्ड. मैं हमेशा उनको बोलती थी कि तुम बंद करो देना और लोगों को प्रोत्साहित करो बंद करने के लिए. सब जब बंद करेंगे तो कहाँ फिर इफेक्ट होगा ना उसका. बट ऑफ कोर्स मतलब ही यूज्ड टू से कि वी हैव टू पे द न्यूसेंस वैल्यू. तो आई मीन, बीइंग अ प्रोफेशनल, I didn't ever have to do it. But if I put myself in the businessman's shoes, I don't know. See, what has happened is, नहीं, इस मामले में मेरा विनीता जी, मेरा इसमें एक सजेशन ये है कि वॉलंटरी हम ऑफर नहीं करो रिश्वत किसको अपना काम करवाने के लिए, कि भाई मेरा काम करवाने के लिए पैसे ले और काम कर, मगर जब सामने आ रहा काम कर ही नहीं रहा और वो हमको वही है. कंपेल कर रहा है कि भाई काम तभी होगा, That's what I said. That's what I said. तब पैसे दीजिए. हाँ नहीं, I'm talking against that also कि तभी भी नहीं देना चाहिए. नहीं ऐसा है, देखो, वी लिव इन ए नहीं तो वो टाइम ऑफ ग्रेट कंपटीशन एंड क्या कहेंगे कि मे बी देर इज अ परसीव्ड सेंस ऑफ डिप्रिवेशन. ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं है. देर इज इनफ टू गो अराउंड इन द वर्ल्ड. देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, आई बिलीव. बट देर इजंट इनफ फॉर पीपल्स ग्रीड. तो अगर कोई लोभी हो जाता है कि मुझे मेरी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक चाहिए और वो मैं किसी भी तरह लेकर के रहूंगा, यहाँ से तो सी, अभी अभी नाउ लेट्स गेट बैक टू द वेदांतिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल थॉट प्रोसेस. ऐसे ही करते हैं, देखो, कि मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक चाहिए, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका, सी, दिस होल थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द्वैत. दिस होल थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेपरेशन, कि I happen to be an individual entity which is limited in some respect, which is separate from the rest. So therefore, to increase my size in some way, so because I feel I'm incomplete, I want to make it more complete by adding things to myself. This is the misunderstanding. ये जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे मन में रहेगा, तब तक ये ग्रीड, तब तक ये कंपटीशन, तब तक ये होर्डिंग, तब तक कॉन्फ्लिक्ट, ये बना रहेगा. इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. द ओनली वे टू अवॉइड दिस, और द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस, इज बाय अंडरस्टैंडिंग हु वी आर क्लियरली. तो उसमें क्या होगा कि वी विल ओनली टेक एज मच फ्रॉम द एनवायरनमेंट और द सोसाइटी एज वी नीड. नारायण भाई, आप कुछ कर रहे थे? नारायण हाँ, भाई मैं कुछ कह इस रहे आप? मामले में महाभारत में महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब भीष्म शरशैया पे लेटे हुए हैं, अंतिम समय है उनका, और कृष्ण उनके पास में आके बैठते हैं और कृष्ण भीष्म पूछते हैं कृष्ण से कि कैसे हो, अच्छा हो? तो बोले अभी क्या सब कुछ ठीक हो गया, बोले आपके हिसाब से? कृष्ण को पूछते हैं, बोले सब कुछ ठीक तो क्या करना था? बोले मुझे, मैं तो सिर्फ जो काम करना था वो करना हो, बोले जो धर्म संस्थापन के लिए जो करना था वो किया. बोले ठीक, मेरा मतलब, बोले क्या ये सब ठीक हुआ क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ बोले मैं. तो बोले किस पक्ष में, पांडव के पक्ष में पूछ रहे हो कि कौरवों के पक्ष में? तो बोले दोनों पक्षों में सही कुछ बताइए बोले मुझे. तो बोले पांडव के लिए तो ठीक था ही बोले,
तो भीष्म पूछते पांडव के लिए कैसे ठीक था? बोले जो आप ये जो चल रहे थे कदम कदम पे, कि कृष्ण कर्ण के साथ में जो ठीक नहीं हुआ, दुर्योधन के जांग के ऊपर में आपने गदा चलवाई, ये ठीक नहीं हुआ। वो जो ऐसे उदाहरण देते हैं कि जिससे धर्मराज से झूठ बुलवाया, ये ठीक नहीं हुआ। तो बोले कृष्ण बहुत अच्छा जवाब देते बोले उनको, कि बोले युग के अनुसार, बोले सब हर एक का युग के अनुसार हमको बदलना पड़ता है। बोले बोले आप राम अवतार में ऐसा नहीं चलते थे बोले, और आप कृष्ण अवतार में आप खुद ऐसा चल रहे हो बोले, तो आपने खुद भी ऐसा चलना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं। बोले राम अवतार में रावण जो था शिव भक्त था, अभी ऐसे ऐसे भक्त नहीं है बोले। ऐसी वजह से मतलब उस समय मंदोदरी जैसी सती थी रावण के घर में। ये सब बातें जब राम के अवतार में हुआ तो उसमें वो राम को जरूरत ही नहीं पड़ी चलने की। मगर अब जब ऐसा है, द्वापर युग और त्रेता युग में इतना अंतर है कि यहाँ पे कदम कदम पे छल, कदम कदम पे झूठ फैला है। तो धर्म संस्थापन के लिए मुझे ये सब छल करना पड़ा बोले। इसलिए मेरा छल करना जो आपको ऐसा लग रहा है गलत है, तो इसलिए गलत नहीं है कि धर्म संस्थापन के लिए मुझे सब करना पड़ा, युगों के अनुसार मुझे बदलना पड़ा बोले। राम के युग में मैं खुद मतलब मर्यादा में रहा, कोई छल नहीं किया, पर यहाँ पे मुझे करना पड़ा। कितना सही है, दैट्स सो ट्रू। तो ऐसा हमको वेदांता का एप्लीकेशन जो है ना, वो हर युग में अलग अलग करना पड़ेगा। और हमारा जो आज का रिक्वायरमेंट है, आज का हाँ जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। लेकिन हमारा अगर अंडरस्टैंडिंग पक्का हो कि हम जो अपने आप के बारे में सोच रहे हैं कि मैं लिमिटेड हूँ इन सम मैनर आई एम इनकम्प्लीट, वो गलत है। वो गलत है, ये अगर मुझे पता चल गया तो फिर मैं अननेसेसरी कंपटीशन नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे ना रहो, यू शुड लिव वेल, यू शुड लिव प्रॉपरली, यू शुड नॉट लिव लाइक ए पॉपर, है ना। यू शुड नॉट लिव लाइक ए पॉपर, यू शुड लिव प्रॉपरली, यू शुड लिव अप्रोप्रिएटली, यू शुड लिव सिंपली। दो हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप पैसा मत कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाने के बावजूद उसका अपने लिए जो उपयोग है वो लिमिटेड करो, जितना जितनी आवश्यकता है उतना ही करो। जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 1/5 ऑफ आवर इनकम वी शुड स्पेंड ऑन आवर सेल्स, आवर ओन मेंटेनेंस, एंड अनदर 1/5 वी शुड इन्वेस्ट। देन द 60% रिमाइंडर, 3/5 should be either for atithi or for गुप्त दान और फॉर टैक्सेस, ओपन दान। तो इस प्रकार से अगर हम सब लोग रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। सो इट्स लाइक आई एम डूइंग माई बेस्ट, बट आई एम यूटिलाइजिंग माई एनर्जी, टैलेंट, एफर्ट टू हेल्प द सोसाइटी। तो अभी कल ही मैंने एक जो कहानी सुनी थी, उसमें ऐसा एक था कि देवों को और राक्षसों को भगवान ने बुलाया और दोनों को चॉइसेस दिए कि बहुत खाना तो दे दिया सबको एडिक्वेट, पर दोनों के ऐसे हाथ बांध दिए सीधे करके, तो यानी अपने हाथ से अपने मुंह में नहीं जाएगा निवाला। तो जो राक्षस लोग थे वो भूखे रह गए और खा ना पाए, लेकिन जो देव थे वो तो खुश थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे हाथ करके एक दूसरे को खाना खिलाया, क्योंकि हाथ मुड़ नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हों, अपने लिए जितना आवश्यक है उतना ही करें, और बाकी जो है वो सारा समाज के लिए करें या पर्यावरण के लिए करें, तो वो समाज के लिए और हमारे लिए भी लाभदायक ही होता है। अच्छी थी कहानी वो, तो मुझे अच्छा लगा वो सुन के कि व्हेन वी यूटिलाइज अवर एनर्जी, आवर एफर्ट एंड इवन आवर मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द टोटालिटी रादर देन होर्डिंग इट फॉर आवर ओन सेल्फ, तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग हमारा ठीक होगा तो बिहेवियर वैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। तो हमारा सारा जो एफर्ट है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना। हम लोग न किसी को योगा सिखा रहे हैं, न किसी को भजन कीर्तन सिखा रहे हैं, न किसी को कैसा क्या काम करना हो सिखा रहे हैं। हम लोगों को केवल अंडरस्टैंडिंग, उनकी अकल ठीक कर रहे हैं बस।
उसके बाद में वो क्या करना है वो खुद समझ लेगा। तो कोई चाय बेच रहा है तो चाय बेचो, आप किराना की दुकान है तो किराना की दुकान चलाओ, आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइन हो, वो करो। मैं एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हूँ, मैं वो करूँगा। और ये हमारे विलास भाई है, वो दुकान चलाते हो, दिखो दुकान चलाने दो अच्छी तरह से। सो वंस वी अंडरस्टैंड who we are, once we understand our role in the society, once we understand our relationship with the environment, इन सबका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो हमारे जीवन में, समाज में और पर्यावरण में, विश्व में शांति प्रस्थापित हो, ऐसे ही होना चाहिए। इट शुड रिजल्ट इन पीस at all levels, at my individual level, the family level, the community level, the nation level, as well as the environmental level. ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, कौन चला गया? सभी लोग हैं ना अभी भी? बताइए नीलांजन दादा, आप बिल्कुल साइलेंट हो आज, क्या बात है? बताइए कुछ। हम लोग just want to understand, are we are discussing from the point of view of honesty and dishonesty in our life, or we're talking about truth, satyam? No, What we are, exactly? our whole discussion, overall discussion is how do we apply Vedanta in everyday life and today's life। क्योंकि हम लोग तो आज तो वी आर नॉट लिविंग इन राम राज्य। जैसे अभी नारायण भाई ने कहा था कि राम के समय में रावण भी अ, अच्छा था, शिव भक्त था, लेकिन आज के दिन में अगर हम जो राक्षसों को देखते हैं वो किसके भक्त हैं? उनका तो आचरण हम देखेंगे आज तो राक्षस के ऊपर, राक्षसों के बाप है वो तो फिर उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण का व्यवहार था राक्षसों के प्रति, उसी प्रकार का व्यवहार या उससे कई गुना अधिक हमें भी कपट से इनको निपटाना पड़ेगा, ऐसा है। सो बेस्ड ऑन द टाइम इन विच वी लिव, द एप्लीकेशन ऑफ वेदांता विल चेंज, बट द प्रिंसिपल्स विल रिमेन द सेम। तो हमारा जो एफर्ट है, आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड दोज प्रिंसिपल्स इन आवर एवरीडे लाइफ, टुडेज लाइफ। हम तो कोई राम राज्य तो आज तो प्रस्थापित नहीं कर सकते, पर जो राज्य है उसके अंदर हम लोग अपने आप को कैसे पहचानेंगे, ये हमारा एफर्ट होना चाहिए। बताइए। तो जो भी आप हमने whatever you have discussed just now, whatever Vikram has said and whatever Vinita and Narayan has spoken about, my आपका आवाज कट हो रहा है निरंजन दा। निरंजन दा, आपका आवाज कट हो रहा है। Basically, there are two aspects to it. I'm referring to Veda. Veda primarily consists of two main parts. One is Karma Kanda and basically Dharma Artha Kama. Our regular life, the life that we are all living. So that is what this Karma Kanda aspect to it. Of course, those Karma Kandas are no longer practiced by us. So that has obviously non-existent now. But from there, what we can possibly say that the life that we are living, there the normal life in terms of fulfilling my artha kama, creating wealth so that I can fulfill my desire and my security, and artha not necessarily wealth. Artha is all kinds of power so that I can protect myself, and with that power I can, if need be, I can fulfill my kama. But this artha and kama has to be done through dharma. That is why it's called dharma artha kama. But then the other aspect of life, which is the end part of Veda, is Vedanta, जिसको हम लोग बोलते हैं. So that is Atmakyan. So that's a different kind of life altogether that one has to pursue. If someone has the Viveka and Vairagya, then one can go after Atmakyan. Now, when it comes to our life, since we are talking about our regular life, of course, Atmakyan, it's not that we are not pursuing Atmakyan, we are also doing that. But the point of view of a normal life that we are as a Jivatma, Dharmartha Kama. So here, the primary issue is about Dharma. So the life that we are living, it has to be lived as per Dharma. That is what we are discussing. Like honesty, dishonesty, giving money for temple, whatever. So the question is, like Narayan Bhai has said, in Yuddha, there we
Sri Krishna employed a lot of deception. So was it right or wrong? Okay. Now, like one can also justify कि चलो हम मंदिर में जा रहे हैं एक्सप्रेस लाइन में जाकर के तो ठीक है हम पैसा दिया because the money will go to temple. We can justify like that. Okay. So whether right or wrong from your point of view, like what Vishnu asked, that from the point of view of Pandava it is right. From the point of view of Kaurava, is it right? No. So that discussion can go on forever. So, but my take, I mean, whatever little that I have learned, this whole concept of honesty, dishonesty, all that, it has to be measured in terms of dharma, purely in terms of dharma. Now, if we have understood this basic concept of dharma, then everything is very clear. So, based on that dharma, I can justify what Sri Krishna has done. I can justify or not justify what Sri Krishna has done. Likewise, school admission or getting into a temple or whatever life, it will be a life. So, based on that principle of dharma, and that principle of dharma is perennial. It has not changed. It has not changed in Dwapara, Treta, and Satya Yuga and Kali Yuga also. It's a perennial principle, and that is what Sanatana Dharma is. Sanatana means perennial. So, what is dharma then? Dharma, in a very simple way, like one can explain, that dharma is what I am expecting from others to behave with me, to treat me. Same way, I will also do the same thing to others. It cannot be two different things. So that is dharma. Dharma is whatever I am expecting from others to do to me, that is what I also have to do. Because that is coming from my viveka, that, okay, this is what I'm expecting. But unfortunately, what happened, what Swami Chimanandaji has spoken about on this issue, yes, again, he has spoken about it. He said that our idea of idealism, dharma, idealism, we know. But when it comes to my own ideology of dharma, my personal thing, then there is a disconnect. Okay, I know I can criticize. Yeah, so-and-so has done this, so-and-so has done this. But when it comes to me, I kind of justify. So there is always a disconnect. So if you are really true to Vedanta, Vedantic life, then you have to measure it in terms of dharma. So that is what I might take. Now, another thing that I would like to say, we're talking about truth. Now, like Taittiriya Upanishad has spoken extensively about this aspect of, it says Satyam. The Satyam, normal meaning is truth. Okay, now Vikram explained that, supposing there is an incident where some, antisocial elements are creating a problem, and they are running after somebody, and I know that person where that person has gone, and if this antisocial come and ask me, the truth is I know where he has gone. But should I tell or not? Likewise, Valmiki's example is also there. So that is why Taittiriya Upanishad has explained that Satyam is actually, there are three things. One is Satyam, second is Ritam, and third is Priyam. Satyam is Satyam, truth. Universally it is truth. But how I apply that truth is being explained by this concept called Ritam. Ritam, in a simple way, is ascertained truth. Ascertained truth. I will have to ascertain myself. Like for example, somebody asked me about something. Okay, what is the direction or any knowledge that person doesn't know has asked me. Now I will say, I can say in many ways. I may not know, but I'll still say something just to give him a proper, some whatever answer I can give him. But that might be false, or that might be correct also. No, that is not the Ritam. It may be Satyam, because you think it is Satyam. So you are saying, so you can say, oh, I have told the truth because I thought it is truth. But it is not an ascertained truth. So you have to always follow this concept of Ritam and not Satyam. Now, again, Ritam need not always be, it is, again, you have to also ascertain that if I say, will it be pleasant to the person that I am telling? Priyam, it has to be Priyam. Because your goal
is not to prove yourself that you are like the champion of rhythm. Okay, you are here to serve the society, follow dharma. So if you say something to somebody as a rhythm, a certain truth, and that is in a very harsh manner, or that person doesn't like it, it hurts his ego, then he will not accept it or he will not follow it. And he may have enmity and whatever, it will have a different consequence. So that is why it says it has to be preamble. So anyway, this is a very simple thing I'm trying to explain, because I also do not know much about all this. Little that I have read Taittiriya Upanishad, so from my Guru Mataji. So this is what I have said. So this is what is my take on this. So now based on this, we can always discuss whether going to a temple express line is correct or not. And likewise any other. That's all. Thank you. Thank you, Dada. That was really wonderful. So, what I have, I guess, bottom line, whatever I have understood in my life is I should always consume less than what I produce, just like Kumar Dada was saying last time. In my case, I say consume less than what you are able to earn. So, हिंदी में कहेंगे कि जितनी बड़ी चादर है उससे ज़्यादा पैर मत पसारो, चादर देख करके पैर पसारो. So, we should only extend our limbs to the extent we have the covering. Otherwise, don't extend the limbs. Otherwise, your limbs will be bare. ऐसा नहीं होना चाहिए. This principle I have implemented in my life since my student days. कि हमारी जितनी आमदनी होगी उससे कम हम खर्चा करेंगे. मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, इट्स ओके. हमारे मन में ऐसा कभी नहीं आया कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम दुखी हैं. ऐसा नहीं हुआ कभी. वॉट एवर वी वर एबल टू अफोर्ड, वी वर हैप्पी विद इट. तो ये जो कंटेंटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक दिस क्वालिटी शुड बी इनकलकेटेड बाय एवरीबॉडी. उसमें अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स अडियरेंस टू कंटेंटमेंट यू विल बी इनकॉम्पिटेंट या यू विल बी लेजी, ऐसा मत करो. वी शुड keep on working as best as we can, produce as much as we can based on our capacity, but out of that consume only what we need and never unnecessarily indulge. तो ये मैंने सीखा है. इसके ऊपर और किसी के कोई विचार? संदीप भाई, आपने कुछ कहा नहीं अभी तक, तो अगर आप कुछ कहेंगे then we can get your opinion as well. Are you there? Are you still there, Sandeep? You'll have to unmute. If you are speaking, we are not able to hear you yet. नहीं? ठीक है, चलिए. Any other items you want to discuss today, or this is okay? We can call it a night and then we can meet again next time when other people are also here. We would like to hear the views of. Kumar was supposed to join, he didn't join. नहीं, वो आकर के आधे घंटे में चले जाने वाले थे ऐसा मुझे बताया था. हाँ, नहीं, हाँ. पर अभी मेरा आया भी नहीं, इसका actually- मतलब वो नहीं है मेरा भी अवेलेबल. dinner time है 7:30. I have to reach there before 7. That is ठीक the है. मैसेज में master था route. उनके, बट हाँ, 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 मैसेज में में लिखा था उन्होंने, message बट में probably दिया. it could not. हाँ. No, I definitely enjoy this because I do not like to miss it. Even though now I have a gap, 6:30 to 7:20 that I have gap. Because I have to take another 2-3 minutes to reach my dining hall, and before 7:30, Mataji instruction, all of us have to eat together. So I have to be there before 7:30. So But it's only good, 2 we finished minutes. in a good time. Yeah. Yeah, no, it's well in time, but we like to continue. But like नो Vinita नो and me नहीं, इट्स always ओके. हम सब लोग साथ में रहेंगे तो करेंगे कंटिन्यू. आप लेकिन निरंजन But दादा, चलिए, आप अगर प्रार्थना बोलोगे ना अंत वाली तो अच्छा रहेगा. आप बताइए, प्रार्थना करेंगे आप निरंजन दादा? प्लीज. हाँ, कर सकते हैं. हाँ करिए, हम म्यूट हो जाते हैं. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.